In last class, we have seen how a long DNA molecule becomes able to be accommodated in a small nucleus. Means we have studied packaging of DNA helix. Right? So DNA with protein forms higher level of structures, nucleosomes, solenoid, supersolenoid, and then chromosome, which is packed inside the nucleus. Now we have to study about the properties of genetic material. ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? पहले properties of genetic material. कौन ऐसा सब्सटेंस है जिसको हम जेनेटिक मटेरियल कह सकते हैं? बेटा, कार्बोहाइड्रेट, whether protein, whether lipids, whether nucleic acids, and nucleic acids are of two types, DNA and RNA. So which molecule is best suitable to carry information from one generation to next generation? Which molecule is regarded as the common genetic material and why? क्यों common genetic material हम कहेंगे किसी को? उसके क्या कैरेक्टर्स होनी चाहिए? उसके कैरेक्टर्स क्या होनी चाहिए ताकि वो कॉमन जेनेटिक मटेरियल कहलाएगा? What are the properties? तो किसी भी कंपाउंड को जेनेटिक मटेरियल कहलाने के लिए देयर आर सर्टेन क्राइटेरिया. ठीक है, एंड ईच क्राइटेरियन इज इंपॉर्टेंट एंड वेरी वाइटल टू मेक दैट मॉलिक्यूल जेनेटिक carriers, means genetic material. So what must be fulfilled by a molecule to be called the genetic material? तो ये प्रॉपर्टीज हम देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए. One of the most important property that must be present in a molecule is the property to form its copy. Right? So this property by which a molecule is able to form its copy is called replication. So a molecule must be replicable. उसमें कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए बेटा? रेप्लिकेशन करे. रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होनी चाहिए. So the molecule must be replicable. Right? And हम लोग जानते हैं कि DNA is the molecule that is able to form its own copy. DNA forms DNA. We have studied कि DNA जो है या DNA बनाता है. DNA जो है वो DNA बनाता है, and this process of formation of its copy by DNA is called replication. One molecule other than DNA is also able to form its copy, but in an indirect way. Indirect way में बनाता है. RNA is able to form its copy, right?
by means of forming the DNA. So RNA after reverse transcription forms DNA, and DNA after transcription, right? DNA after transcription forms RNA. Right? So RNA is also able to form its copy by following an alternate pathway. Clear? So it is not clear that both RNA and DNA have the ability to form their copies. DNA डायरेक्ट बनाता है और RNA इनडायरेक्ट बनाता है. So ये दोनों प्रॉपर्टी इसमें है DNA as well as RNA. Right? The second important property that must be present in the genetic material is the ability to transfer information from one generation to next generation. Right? So second important property of the genetic material is that it must be inheritable to pass from one generation to another generation and transfer characters from parents to progeny. Right? These two properties are present in DNA as well as RNA. आपने देखा है ना, वायरस हम लोग पढ़े थे 11th में, तो वायरस में आपने देखा कि आरएनए से डीएनए से फिर आरएनए, फिर वायरस बन जाता है, नया वायरस बनाता है. जिसके पास आरएनए है वो भी नया वायरस बनाता है. इट मीन्स इट हैज आल्सो द एबिलिटी टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन. Now the third important property that must be present in a genetic material is the ability to change, the ability to mutate. So mutable, the molecule must be mutable, but the molecule must be mutable, means it must have the ability to change. However, mutability के साथ साथ stability होनी भी जरूरी है. Means frequent mutation is not allowed. Stability is also required. Stability is also required. So DNA both is replicable, inheritable, and mutable, as well as stable. However, RNA is replicable, inheritable, and mutable, but not so stable. उतना stable नहीं है जितना DNA है. That is why frequent changes are going on in RNA. Variation होता है हमेशा, continuous variation होता है. That is not accepted by the nature. Right? So out of these four properties, यदि हम कंपेरिजन करें, so DNA is a better genetic material than RNA. So DNA is better genetic material
material, then RNA, due to stability and also has the ability to change, to inherit as well as to replicate. तो ये चारों प्रॉपर्टी जिसमें भी होगा जेनेटिक मटेरियल कहेंगे। ये तो आपने देख लिया, ठीक है। तो ये चारों प्रॉपर्टी डीएनए में है और मैक्सिमम प्रॉपर्टी आरएनए में भी है। अब है कि डीएनए और आरएनए में स्टेबिलिटी का क्या कारण है कि वन इज मोर स्टेबल, अदर इज लेस स्टेबल, राइट? व्हाई डीएनए इज मोर स्टेबल? डीएनए ज्यादा स्टेबल क्यों है? आरएनए लेस स्टेबल क्यों है? राइट? डीएनए इज मोर स्टेबल, डीएनए इज मोर स्टेबल, क्यों है मोर स्टेबल? It is double stranded. It is double stranded. ये double stranded है, तो double stranded होने से क्या होगा? Bases are not exposed. आपने पढ़ा है ना डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, तो आपने क्या पढ़ा है कि शुगर और फॉस्फेट बैकबोन बनाता है और बेस जो है प्रोजेक्ट करता है अंदर की तरफ। दो स्ट्रैंड है, तो इसका मतलब बेस जो है वो अंदर है, शुगर और फॉस्फेट बाहर है। आरएनए सिंगल स्ट्रैंड है, तो वहां सब कुछ एक्सपोज्ड है, राइट? दूसरी बात, आप जानते हैं कि आरएनए हैज राइबोज शुगर, डीएनए हैज deoxyribose sugar, deoxyribose sugar makes it more stable in comparison to the molecule in which ribose is present. क्योंकि राइबोज में आप जानते हैं सेकेंड पोजीशन पर OH होता है, जो डीएनए में ऑक्सीजन नहीं होता है, OH नहीं होता है सेकेंड पोजीशन पर। OH होने के कारण राइबोज जो होता है that is more reactive in comparison to deoxyribose. And the third important property that makes DNA more stable in comparison to RNA, that is presence of thymine in place of uracil. आपको पता है ना थायमीन होता है डीएनए में, राइट? आरएनए में यूरासिल होता है, डीएनए में थायमीन होता है, 5-methyl यूरासिल होता है। That is why DNA is more stable in comparison to RNA. Now the question arises कि पहले कौन बना? तो I have already told you, world evolved around RNA. World evolved around RNA. तो RNA जो है वो पहले बना, and due to frequent changes, it has to form a molecule that must be stable, and hence DNA was formed. Clear? So RNA पहले बना। क्यों? क्योंकि आपको मैं बताया था कि आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है, इट मीन सिंपल है इन कंपैरिजन टू डीएनए। दूसरी बात, आरएनए एडेप्टर का काम भी करता है, आरएनए एंजाइमेटिक एक्शन भी करता है, and without enzyme no biochemical reaction is possible. That is why RNA पहले बना, then DNA was formed. So it is not clear that DNA is the genetic material because कार्बोहाइड्रेट में ये प्रॉपर्टीज नहीं होते, फैट्स में ये प्रॉपर्टीज
प्रॉपर्टीज नहीं होंगे, प्रोटीन्स में ये प्रॉपर्टीज नहीं होते, ये प्रॉपर्टीज केवल डीएनए एंड आरएनए में होता है। बट स्टेबिलिटी के कारण डीएनए इज द कॉमन चॉइस and hence it is the common genetic material. RNA is genetic material in some of the viruses.